Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड सीरीज स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एमसीक्यू क्वेश्चन की। तो फिर नेक्स्ट आज 52 क्वेश्चन है। इन डीप स्लीप फॉल्ट द रेट ऑफ द नेट स्लीप इज, तो इसका आंसर है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कूलम्स लॉ ऑफ फेलर इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, तो इसका आंसर है आंसर बी, सिग्मा सी इक्वल टू सिग्मा जीरो प्लस टेन फाइव सिग्मा एन ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन फॉल्ट सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन फॉर मोस्ट ऑफ द फॉल्ट इज अबाउट, तो इसका आंसर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ theta, the angle between the fracture surface and the direction of greatest principal stress sigma 1 for most of the shear fracture is determined by the expression, तो इसका आंसर है आंसर सी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रिटिकल shear stress necessary for fracturing to occur in a rock under compressed stress condition is governed by, तो इसका आंसर है आंसर बी, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। The envelope in the mode diagram of shear fracturing in a rock under compressive stress condition above the brittle ductile transition, that is, the linear relationship between fracture strength and confining pressure is called, आंसर बी है इसका, वॉन मिसेस फेलर एनवेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द if the principal stress direction are vertical or horizontal and the angle of internal fraction is 30 degree, which of the following faults which form at or near the earth surface, तो इसका आंसर है all of the above, normal slip, strike slip और thrust slip। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। strike slip fault form when, आंसर बी, सिग्मा 2 is vertical। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस MPa मेगा पास्कल इज, आंसर बी, मेगा पास्कल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ स्ट्रेस ऑफ 2,54,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, आंसर ए, 254.000 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the hanging wall of a high angle thrust fault has moved up while the footwall stayed in place, the fault is called, answer C, upthrust। Next question. An isolated patch or outcrop of younger rock surrounded on all sides by geological older rock is called, answer A, outlier। Inlier, next question, inlier may be found by, आंसर ई है, बोथ बी एंड सी, एंटिक्लाइन हिल और हॉस्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अनकन्फर्मिटी इन विच लोअर रॉक आर ऑफ इग्नियस रॉक मास लाइक ग्रेनाइट इज कॉल्ड, आंसर बी, नॉन कन्फर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज आर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, wrench fault, tear fault, transfer fault। Next question. Which of the following fault are parallel to the regional structure, answer B, rift fall। Next question. A fault in which the strike of the fault plane is adjacent normal to the strike of the adjacent bed is called, answer B, dip fault। Next question. In thrust fault, answer A, crust fault।
crust shortens. Next question. The net slip is measured along answer C fault plane. Which of the following fault is not a dip slip fault? Answer D. None of the above. इसमें से कोई नहीं. Next question. The strike slip faulting is accommodated by answer D. Both A B. Shortening in horizontal plane and stretching in horizontal plane. Next question. In translation along right-handed and left-handed strike to slip fault are balanced, then the strain is answer C coaxial. Next question. In thrust fault, the fault plane dips answer A less than 45 degree. Next question. Which of the following equation is fundamental strain equation? Ramsey. We determine the stretch and shear strain for any line of any orientation is strain body. Answer C. Lambda dash is equal to lambda dash 3 plus lambda dash 1 upon 2 minus lambda dash 3 minus lambda dash 1 upon 2 cos 2 theta d. Next question. The fundamental equation of ratio of shear strain to quadratic elongation y upon lambda, which describe the mix of change is angle versus change in length is strain body. Answer A. Y upon lambda is equal to 1 by 2 1 upon lambda 3 minus 1 upon lambda 1 sin 2 theta d. Next question. The line along which the value of y upon lambda approaches 0 are characterized by answer A. Change in length with very little shear strain. ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैलकुलेशन बेस पे हैं ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द फंडामेंटल स्ट्रेस इक्वेशन टू कैलकुलेट द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन ऑन अ प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन. आंसर बी. सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 by 2 cos 2 theta. Next question. Which of the following equation is a fundamental stress equation to calculate shear stress sigma s on a plane of any direction? Answer C. Sigma s is equal to sigma 1 minus sigma 3 upon 2 sin 2 theta. Next question. The normal stress sigma n at a point oriented plus 30 degree when sigma 1 is equal to 40 megapascal and sigma 3 is equal to 22 megapascal will be आंसर बी 25 मेगापास्कल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये इसका कैलकुलेशन है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83. फ्रॉम द मूर स्ट्रेस डायग्राम वी कैन डिटरमाइन आंसर डी ऑल ऑफ द अबव द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन रिपीटेटिव टू सिग्मा 1, value of normal stress acting on a specific plane, value of shear stress acting on a specific plane. Next question is the radius of the circle of the Moore scale stress diagram represents answer C deviatoric stress. Next question is the deviatoric stress is a answer B non-hydrostatic component and tend to produce distortion. Next question. The differential stress in the Moore stress diagram is represented by answer A diameter of the circle. Next question. When all the three principal stress are non-zero but two of the three principal stress have the same magnitude, that series is known as axial stress. Answer C axial stress. Next question है which of the following condition is are true इसका है which of the following condition is are true in case of triaxial stress acting at a point. तो इसका आंसर है हमारा all of the above, मतलब ये सारे होंगे. All principal stress can be compressional or principal stress can be tensible
There are no restrictions regarding whether the principal stress are tensile or compressible. There can be combination of both the stress. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैच करना है सी ए मैच ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ स्ट्रेस विद देयर मोर स्ट्रेस डायग्राम. तो यूनी एक्सियल स्ट्रेस ये सेकंड वाला है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का फर्स्ट वाला, सी ट्राइएसिक स्ट्रेस का ये फोर्थ वाला है और एक्सियल स्ट्रेस का ये 3 नंबर वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द क्रिटिकल शियर stress necessary to cause the activation of an existing fracture is equal to the product of dash acting on a fracture surface. Answer B. Coefficient of sliding friction of the rock and the normal stress. Next question है, coefficient of sliding friction expresses the ratio of dash on the fracture surface at the instant that sliding initiates shear stress to normal stress. Answer A. Next question. The law that describes the initial stress necessary to cause reactivation in a rock is called Bayerle's law. Answer B. Next question है, the mechanics of fracturing of the rock is strongly controlled by. Answer D. All of the above. Intergranular cracks, transgranular cracks and intergranular cracks. Next question. The amplification of the stress at tip of microcracks depend on dash of the microcracks. Answer D. All of the above. Orientation, length, width. Next question है 95. Which of the following is associated with crystal fiber vein? Answer D. All of the above. Antiaxial veins, syntaxial veins, coaxial veins. Next question. In syntaxial crystal fiber veins, answer B. Outside in and the mineralogy is same as that of wall rock. बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे. इन सब क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं. थैंक यू.